Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well and welcome to this daily live stream. Hopefully it will be every day. And the goal is to make sure that we understand the whole syllabus of A levels, AS and A levels by 23rd March. Okay, because 23rd March ke baad we will be doing past papers, and I know many of you are doing AS, some of you are doing accelerated, some of you are doing composite, some of you are doing just the A2. So right now for the foundational part, I'll make sure that we have the same classes. So it will be for the basic parts of chemistry like atomic structure, chemical bonding, some physical chemistry, some organic nomenclature and all that. It'll be one combined class, and later on we will change it so that everybody, based on their pathway, they are able to they're able to work well and function based on whatever the subject content is. A couple of suggestions that students gave कि डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए क्योंकि हम तो रातों को जागते हैं और रातों को पढ़ते हैं. पढ़ना चाहिए, वक्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एज लॉन्ग एज यूर स्टडिंग इट्स फाइन. सो आई हैव ट्राई टू कीप द डार्क बैकग्राउंड. आई होप इट हेल्प्स. एंड एक और सजेशन थी कि उर्दू और इंग्लिश दोनों को मिला के बात करनी चाहिए. सो या आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल. और अगर कहीं पर आपकी कोई और सजेशन हो देन आई रियली वैल्यू दैट. सो मेक श्योर कि आप वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें. You will be obviously using the data booklet, so I would suggest कि हर class के लिए everybody should have data booklet. I'll put the link in the description. और अभी भी मैं chat में आपके साथ share कर देता हूँ. Assalamu alaikum Moshk, good to see you here. So data booklet is essential to any questions of chemistry that we do, especially in AS and A levels. It's important that you have a copy of this. A physical copy will obviously help. Of course it's not given to you in the exam anymore, but एग्ज़ाम में आपको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना वो ज़रूर प्रोवाइड करेगा. सो इस वजह से अभी तो हमें नहीं पता कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है. सो इसलिए हैविंग अ डेटा बुकलेट हैंडी इज़ हेल्पफुल. ठीक है, पहली बात तो ये होगी. नाउ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ वी विल बी गोइंग थ्रू दिस, एंड ऑफ कोर्स this is A levels, this is kind of different from O levels. So just as an ice breaking exercise, I'm going to give you a few questions and I would obviously give you a minute to solve them. I have a stopwatch over here, so I'll give you a minute to solve them and I would suggest कि आप इनको कर लें. Alright, so let's get started. Alright, so the first question is, I'm going to write a few species. So that's a word, species. So species, O levels में हम इसको particle बोलते थे. Okay, and अब हम इसको species बोल रहे हैं. Particle भी बोल सकते हैं, there's nothing wrong with it. So I'm going to give you a few of them and I want you to figure out which one has the smallest number of electrons. Okay, so let's see. We have So we have a poll going on. Go on, tell me. Yeah, so let's see. Now, first of all, did you notice that most of these are completely new or unlike what we saw in O levels? So yeah, A levels is different from O levels. एंड देर आर नॉट दैट मेनी रिस्ट्रिक्शंस जो हम ओ लेवल्स में करते थे ना, अपने आप को बहुत लिमिट करते थे, वैसा नहीं होगा यहाँ पे. सो लेट्स सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू वी हैव. सो हाउ डू यू फिगर दैट आउट कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता कैसे चलता है. सो उसके लिए वी हैव अ वेरी हैंडी फॉर्मूला. इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोटॉन माइनस चार्ज. That's a really easy way of figuring this out.
So take the periodic table. Boron has 5 protons, so 5 minus 3, 2. Beryllium is 4 protons, so 4 minus 2, 2. Hydrogen is 1, so 1 minus minus 1 because charge is minus 1, so that's again 2. And this one, 2 minus 1, that is 1. So helium is the answer, D was the answer. But there's a term that I would like you to know. These three are called isoelectronic. What this means is that they have the same number of electrons. Okay, so that's what they are. They are isoelectronic. All right. So yeah, you're right. Now moving on, I'm going to give you another question. So I have these 4 ions. I want you to tell me which of these has more electrons than protons and more protons than neutrons. ठीक है, so basically आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा है यहाँ पर जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी ज़्यादा हैं. So I'm going to use this symbol D for hydrogen with a 2 mass. Basically उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है. ठीक है, and this is H3O positive, this is OD negative, and this is OH negative. So go on, tell me which one has more electrons than protons and more neutrons than, more protons than neutrons. Okay, go on. In case you want to know, this D is basically hydrogen with 1 proton and 2 as the mass. You're right, helium is a noble gas, but right now this is not in the noble gas structure. It has lost an electron. For whatever reason, it has lost an electron. तो इसकी वजह से ये noble gas form में नहीं है इस वक्त. So you have 10 more seconds. Yeah, so how should we answer this question? Because getting the right answer is okay, but getting the right answer using the right strategy is even better. So let's see, how should we get this? So the answers that we have gotten is, some people are saying A, 2 people have said A, and one person has said C. Let's see. Now let's read the question and try to figure out if we can get some information from it. So this question is saying more electrons than protons. इसका मतलब क्या हुआ? The thing will have a negative charge. More electrons than protons का ये मतलब होता है ना, it has a negative charge. And then it says more protons than neutrons. इसका मतलब है इसमें ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? Because this has equal number of protons and neutrons. Similarly, अगर ऑक्सीजन होगा तो उसमें 8 और 16 होता है, equal number of protons and neutrons होगा. और अगर हाइड्रोजन होगा, that's the only case in which you have 1 proton and 0 neutron. तो जहाँ हाइड्रोजन होगा
तभी उसके प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, न्यूट्रॉन कम होंगे. Okay? So that means we need something with a negative charge and something that has H in it. So that's only one option, D, and that's our answer. Most your question is absolutely right that in O levels we said noble gases are non-reactive, and yeah, that is true for most cases. But there are certain cases. हम O levels में reactivity कहते क्या थे? हम कहते थे कि उसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या 0 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यही कहते थे ना हम ओ लेवल्स में कि लास्ट में 8 हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा और उसकी वजह से वो रिएक्ट उस तो उनके नोबल गैस के ऑलरेडी 8 होते हैं तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते. ये बात ठीक है, बट ओनली फॉर स्मॉलर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस. लार्जर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस फॉर द लास्ट 60 years we have seen them react for reasons that have nothing to do with 8 electrons, but reasons that we will study. Some of them we will, some of them are beyond A levels. तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें जो हम A levels में हम सीखेंगे they are very different from O levels. तो उसका मतलब ये नहीं है कि O levels झूठ था, इसका मतलब सिर्फ ये है कि A levels is evolution. A levels is more complex, it takes into account more factors, and O levels was a very simplified version, a very simple introduction to what chemistry is. Okay? Alright, so this was another question that had to do with your ideas about atomic structure. Okay, so those are interesting questions, and they're all just telling us how A level questions are not that straightforward. तो इसका मतलब है कि A levels को टैकल कैसे करना है हमने. We have to make sure कि हम past papers को छोड़ें नहीं. So मजबूती से आपने थाम लेना है और पास्ट पेपर्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना. विदाउट इट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक चीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चीज़ है, एंड इट इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ ऑफ देम दैट मेक श्योर दैट यू गेट द coveted A star that you're looking for. Okay, let's do the last question before we get to the concept of atomic structure. So I have NaN3. This is an ionic compound. Charge on sodium is always going to be, in this case, +1. And of course, the charge on azide, this azide ion, is going to be -1. My question is, how many electrons are more in the azide ion than the sodium ion? How many more electrons does azide have than sodium? Go on, think about it. You will obviously need a periodic table. Assalamualaikum Wahab, good to see you here. Okay, so I have one answer. It says 7. Assalamualaikum Hassan. Assalamualaikum. I like that name actually. Azide is N3 with a negative charge. This thing. It's not an element, it's an ion. Assalamualaikum Tawab. Thank you.
So let's do it. Let's see how we should do it. I told you that electrons are protons minus charge. Okay, so electron is proton minus charge. Okay, so for sodium it's really easy. For sodium ion we know that we have 11 protons in sodium minus 1, which is 10 electrons. For azide that's a little different. Nitrogen has 7 protons, and this number 3 is telling me that there are 3 nitrogen atoms combined together. So अब ये हो जाएगा 3 times 7, which is 21, minus charge, which is minus 1, so अब बन जाएगा 22. So sodium ion has 10 electrons and azide ion has 22 electrons. अब यहाँ पे एक common mistake है. Students think कि अच्छा नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट 14 उसका mass है. It is 7 protons that we need to know. Also, this is minus 1 charge. So जब आप उसको minus करोगे तो minus minus 1 plus 1 बन जाएगा. And that is why it's going to have 22 electrons. So how many more does it have? 22 minus 10. That is 12 extra electron. ठीक है? So again, do you notice कि उसकी working कितनी 3-step process था? And all of that, again, you can accelerate that if you do practice. And practice is the most important thing in AS or A levels. Yes, Mashka, you're absolutely right. Okay, so this is all of these questions are basically about atomic structure, which is the section 1 of the syllabus. Today we'll try to do section 1.1 and 1.2, and from there we'll understand कि कौन सा होता है क्या, atoms क्या हैं, कैसे होते हैं, and that is how we'll kickstart our journey of understanding chemistry. So सबसे पहला लफ्ज़ जो हमने सीखना है, that is, so these words are important. So क्योंकि आप उसके बगैर बात नहीं कर पाओगे, communicate नहीं कर पाओगे. So knowing these terms is important. So the first one that I want you to know is what exactly is an element and how is it related to atom. क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हमें पता है वो एटम से छोटे भी होते हैं. What is so special about the atom? And अभी हमने स्पीशी का लफ्ज़ यूज़ किया है. We will have so many different species. So atom में ऐसा क्या है? So let's see. Basically, element का मतलब ये होता है it's a pure substance made of only one kind of atoms. That's what an element is. It is pure substance made of only one kind of atom. Okay, and what happened here? Yeah, and now we need to know what atom is. So atom is the smallest part of an element. So smallest part of element अगर मैं बोलता हूँ इसको तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि atom is not the smallest. I know that there are smaller things than atom. तो फिर इसमें ऐसा क्या है? That can take part in a chemical reaction. That is the important part about this definition. Not only is it not the smallest, it is the smallest one that can do a chemical reaction, that can take part in a chemical change. So that is why this atom is an important thing. Okay? So now we know why all elements have the same number of same atoms जो उनके आपस में होते हैं. इसका मतलब है sodium will always have atoms with 11 protons, potassium will always have atoms with 19 protons. Okay, because protons determine the element. And atom के बारे में ऐसी क्या खास बात है? Atom is the smallest part of an element that can actually take part. So atom के उससे भी छोटे होंगे and all of that, but this one is important कि ये chemical reaction कर सकता है. Okay. All right. So moving on. So I have a suggestion here. The smallest part of an element that can behave like an element. बात तो ठीक है, but कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया मुझे इससे.
एंड द होल पॉइंट इज़ कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आपने एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पता है जो तुम जानना चाहते हो. तो जब आप कहते हो ना कि दैट कैन बिहेव लाइक एन एलिमेंट, देन फर्दर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि भाई बिहेवियर लाइक एन एलिमेंट का क्या मतलब है. सो केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली द बिहेवियर लाइक एन एलिमेंट. ओके. Okay, so now that we know what atom is or what the element is, तो अब सारे atoms में जब एक ही तरह के होंगे और उनसे बनेगा वो, तो atom का mass होता है और size भी उसका बहुत छोटा होता है. कितना छोटा होता है? There is a new unit for the size of atom, we call it angstrom. Okay, दिस इज 10 पावर माइनस 10, यानी कि 0.0000 लेवल पे जाके आपको कोई पॉइंट मिलेगा. और इसका मैस कितना होता है? 10 पावर माइनस 27, 10 पावर माइनस 26, यानी कि बहुत ही छोटा होता है. लेकिन इवन दो इट्स स्मॉल, इट इज़ सिग्निफिकेंट. एंड नॉट ओनली इज इट स्मॉल, इट्स मोस्टली एम्प्टी, है खाली. तो अब उसके बीच में देर इज़ अ पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सो ये हमारे पास एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है. वी हैव सीन दिस बिफोर. हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एज यू कैन सी, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉन्स. जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो उसमें यू आर अलाउड टू यूज सर्कल्स, क्रॉसेस और फिल्ड सर्कल्स फॉर द इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप न्यूक्लियस का सर्कल नहीं बनाएंगे इन केस यू आर एवर रिक्वायर्ड टू डू दैट. यू विल जस्ट राइट द सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, एंड देन यू विल डू इट. द यूनिट इज एंगस्ट्रॉम. ओके, बट यू डोंट नीड टू नो इट. बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं कभी कभी दे जाता हूँ. ओके, I appreciate that. I appreciate that you're trying to learn Hindi and English. That's great. That's great. I feel like if you learn a new language, it actually boosts your intelligence by a lot. So yeah, I appreciate that. Okay, name that unit again. Yeah, this is the unit. It's basically just telling me that you have a very small atom. And why should we not draw a circle for the nucleus? Because shells are circles, right? So somebody कैन ऑल्सो थिंक कि ये जो न्यूक्लियस आपने बनाया है, जो सर्कल है उसका, वो बेसिकली शेल था और शेल खाली क्यों है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन आ सकती है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप सर्कल नहीं बनाएं. जस्ट राइट द सिंबल एंड दैट्स गुड इनफ. और सिंबल कहाँ से पता लगेगा? प्रोटॉन से. जितने प्रोटॉन्स उतने आपके पास उस वो वाला एलिमेंट आपका होगा. देन वी हैव दीज शेल्स. और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास ओ लेवल्स में हमने सीखा था. इनफैक्ट ये ओ लेवल से भी बहुत पहले का सीखा था. But turns out it's not exactly how they are. There are important bits here. For example, the first important thing is that atom is mostly empty. That's the first important bit. Or that is true. How empty is it? 99% of the atom is empty. Okay? So that's the first thing. कि आपका atom जो है वो mostly empty होता है. But there's this small part in the middle which is pretty dense. Okay? और डेंस का मतलब यहाँ पे ये भी है कि ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट थिंग. सो एटम्स आर टाइनी, बट उसके बीच में एक बहुत ही छोटी चीज़ है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्मॉलर है उससे. और दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट पीपल गिव कि अगर एक एटम का साइज फुटबॉल स्टेडियम जितना होता तो उसमें न्यूक्लियस जो है ना वो एक गोल्फ बॉल से भी छोटा होता. So the point is basically to say that there are thousands of times smaller nucleus, but because it's really heavy, that is where most of the atom's mass is. तो तब हमारे पास यह आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास mass है. ये दो लोग हैं which and we are really thankful to these people who were instrumental in figuring this out कि अच्छा atom का structure कैसा होता है और उसमें ये mostly empty होता है और इसके वजह से. एंड टर्न्स आउट कि वन ऑफ देम इज रदरफोर्ड एंड द अदर इज गाइगर. आई थिंक गाइगर इज द वन ऑन द राइट.
या सो इन दोनों ने एक अल्फा पार्टिकल को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया था. बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट था एंड वी कैन एक्चुअली डू इट. आई यूजली डू इट इन माई स्कूल विद स्टूडेंट्स, नॉट विद अल्फा पार्टिकल बट विद अ सिमिलर मॉडल. और उससे हमें पता चलता है कि ये बेसिकली एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी. और इस पार्टिकल को इसको चेक करने के लिए ना कि मतलब वो एम्प्टी है या नहीं है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उन्होंने एक चीज़ यूज़ की थी जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे. Cathode ray is nothing but electrons going really fast in one straight ray. That's it. That's what cathode ray is. और हमने O levels फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी ये, ठीक है. हमारे पास तीन चीज़ें हैं. There is the motion that is given by the thumb. There is the field, magnetic field, that's given by the first finger, and there's the current that is given by the second finger. और इसको मैंने कैसे याद किया था? मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब मोशन के अगर जिधर को थंब पॉइंट कर रहा है उधर को मोशन है. ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इधर से आ रहा है और करंट इधर से आ रहा है. और इसको यूज़ करके आई कैन फिगर आउट कि क्या कोई मूवमेंट होगी अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सो वो मूव करते हैं और उनकी like they basically deviate from their path. Why? Because they're charged. So this is like a proof of that electrons are charged and what kind of charge they have and all that. A very fun basic proof. So let's try this. Let's try to see what will happen. So I'm going to take a magnet. So this is a magnet, north and south. इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं so that we are able to see कि वो किधर को जाता है. So let's say this is a north and this is south. Okay, so this is a magnetic field and this is a cathode ray coming in. Cathode ray क्या है? As I told you, cathode ray is electrons going in. Now remember one thing, electrons are negative, जिसका मतलब है कि जिधर को इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, बिकॉज करंट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव चार्जेस. तो अब क्या होगा? लेट्स ट्राई दिस अगेन. आई एम यूजिंग अ लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली. सो लेट्स ट्राई दिस. सो नॉर्थ टू साउथ है इधर को और करंट है ऑपोजिट ऑफ दैट. सो या इट विल गो अप. सो अप, सो देयर यू गो, इट विल गो अप. ओके, एंड दैट इज शोइंग कि अगर कोई भी मोशन इस तरह से होगा कि मतलब आप देख सकते हो कि अच्छा इधर को है, तो इसका मतलब है हमारे पास फील्ड किस तरफ को आ रहा है. मतलब तीनों में से दो चीज़ें गिवन हो, तीसरी आप निकाल लेते हो. इन दोनों ने पहली चीज़ ये की, तो इन्होंने कहा कि अच्छा अगर कहीं से बेंड हो रहा है तो उसको बेंड करवाते हैं, उसको हम उसका मास डिटरमिन करेंगे. ज़्यादा बेंड हो रहा है तो इसका मतलब है वो हैवी है, सॉरी लाइट है. कम बेंड हो रहा है तो इसका मतलब है वो हैवी है. और उसके चार्जेस वगैरह को भी उन्होंने देखा. और उसमें ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स दैट वी लर्न लेटर ऑन कि उन्होंने कैसे ये सारा कुछ किया. देयर इज अनदर काइंड ऑफ फील्ड दैट वी यूज, नॉट जस्ट द व्हाट यू कॉल मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. आई हैव पॉजिटिव प्लेट्स एंड आई हैव नेगेटिव प्लेट्स. ओके, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा हूँ. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, these electrons are going to come in and we know negative repels negative, right? Unlike charges attract, like charges repel. So यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और ऐसे बेंड हो जाएगा और ये पाथ सर्कुलर होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रियली स्मॉल, वेरी लाइट, तो उसकी वजह से वो ऐसे सर्कल में फ्लो करता है. हाउ डू प्रोटॉन्स डू इट? इफ़ वी हैव प्रोटॉन्स की कोई रेज अगर हमारे पास होती तो वो कैसे बिहेव करती हैं, लेट्स सी. सो प्रोटॉन्स अगर यहाँ से आ रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली दे आर पॉजिटिव, दे विल गो opposite of that and they'll be slower. Why are they slow? Because they are heavier. Alan Walker, let us study please. This is chemistry. Okay. How about I put you in a timeout? Okay. So this is how the protons will go. Notice two things. Number one, proton is going opposite of electron. इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, एक दूसरे के डिफरेंट है. सेकेंड, प्रोटॉन इज गोइंग ऑन अ मच लोअर डिविएशन. उसका एंगल जिस पे वो बेंड हुआ है वो बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा है, विच शोज के इलेक्ट्रॉन इज लाइटर. सेम फोर्स अप्लाई हो रही है बट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा बेंड कर रहा है क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है. एफ इक्वल्स एम में एम छोटा है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़्यादा है. ठीक है, बेसिक फिजिक्स, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है.
Similarly over here, if I have protons coming in, protons will go like this. They will go towards the negative side because they are more attracted by that, repelled by the positive ones. But they will also be in a parabolic path. पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथ्स में आपने सीखी थी ना. सो ये उनका जो पाथ होता है ना, वो पैराबोला है. तो अगर कभी ज़िंदगी में आपने इसका ज्योमेट्री सीखनी हो तो प्रोटॉन का पाथ इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कभी ज़रूरत पड़े. कमिंग बैक टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो अब हमें पता लग गया कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन्स एलिमेंट डिफाइन करेंगे तो फिक्स प्रोटॉन्स होंगे हर एलिमेंट के. 27 है तो इसका मतलब है आई थिंक वो कोबाल्ट है और वो हमेशा वो ही रहेगा. 26 है तो वो आयरन है और वो हमेशा वो ही रहेंगे. अगेन आई एम नॉट श्योर 27 कोबाल्ट ही था. वी कैन ऑलवेज चेक फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल. Yes, 27 is cobalt. Okay. So yeah, that's good. Alright, so we have this thing कि protons और electrons किस तरह से behave करते हैं in a magnetic field, in a electric field. Okay, so now that we know that, let's go to electrons. कि electrons कैसा behave करते हैं और electrons का structure क्या है. और now one thing that we need to know about है, so far हमने देखा electron light होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का मास तकरीबन नेग्लिजिबल है, इट्स जीरो, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस. इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन शेल्स. वो शेल्स क्या हैं, कैसे हैं, वी विल कीप दैट फॉर अनदर क्लास. ठीक है, बट वी जस्ट नीड टू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव. ओके, एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड. एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ पर वो जाते हैं. एंड दे हैव अ रियली स्मॉल मास एंड दे आर नेगेटिव चार्ज. और ये बातें हमें जिन्होंने बताई थी उनमें से वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू दैट वाज दिस गाय J.J. Thomson. So J.J. Thomson was pivotal in understanding the internal structure of the atom. So इन्होंने हमें इस बारे में बताया था. Alright. So that's what we know. Electron, proton, neutrons. हमें उनका रिलेशन पता लग गया. Electron is negative, proton is positive. Electron का mass 0, proton का mass 1. न्यूट्रॉन का चार्ज 0, न्यूट्रॉन का mass वो भी 1. तो इसका मतलब है अगर कोई भी एटम हम लेंगे तो उसके टोटल मास उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके आएगा. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी हैव, दैट मास ऑफ एन एटम मास इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, वी ऑलरेडी हैव एन इक्वेशन दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन माइनस चार्ज, एंड नाउ वी हैव अ न्यू वन दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे एड अप, एंड दैट इज हाउ यू गेट द mass. Yes, that's the one shell that we will talk about. So now we can use this to figure out how many neutrons we have. Another way of figuring this out is कि mass को usually वो A लिख देता है और protons को usually वो Z लिख देता है. तो अब आप इस equation को ऐसे भी देख सकते हो. And another thing that we need to know is that atoms are neutral. Atom के ऊपर overall charge 0 होता है. क्यों? 2 रीज़न है. Proton is positive, electron is negative, and they're equal to each other, so they cancel out each other's charge. Okay, so proton positive है, ये भी बताना ज़रूरी है. Electron negative है, ये भी बताना ज़रूरी है. And then because they're equal, they'll cancel each other's charge. That is how we know कि proton और electron equal है और उसकी वजह से atom neutral होता है. So ये 2 मार्क का क्वेश्चन है अगर कभी आता है तो. Now the next thing is, ठीक है, प्रोटॉन से एलिमेंट बनता है, इलेक्ट्रॉन से आयन बनता है. इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव आयन होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पॉजिटिव आयन होगा. तो बेसिकली कम इलेक्ट्रॉन का मतलब है डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डेफिसिट इज पॉजिटिव. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एक्सेस इज नेगेटिव. सो जब भी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को सोचना है, आपने इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में सोचना है कि पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया इससे, एंड नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया. दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट इज सुपर इंपॉर्टेंट. आपने कभी नहीं सोचना कि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव होगा. नहीं, इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द वन दैट डिटर्मिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू समथिंग दैट डिटर्मिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज आइसोटोप्स. वी नो द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स फ्रॉम ओ लेवल्स, दैट आइसोटोप इज बेसिकली एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि उसके पास सेम प्रोटॉन्स होंगे बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट मास होगा. ठीक है, तो अब हमें ये पता कैसे चलता है
कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम के पास हमारे पास इस तरह से लिखा होगा 11, द स्मॉलर वन इज बेसिकली द प्रोटॉन नंबर, जिसको हम Z भी बोलते हैं या P पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द मास, जिसको हम A भी बोलते हैं, एंड दिस मास माइनस द प्रोटॉन्स विल टेल मी द न्यूट्रॉन्स। अब एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि इसका एक और आइसोटोप बनाओ, सो आपने इसको 1 या 2 इंक्रीज कर देना है या डिक्रीज कर देना है। सो सोडियम 11 ही रहेगा, बट दिस माइट बी 24, दिस माइट बी 25, दिस माइट बी 21, दिस माइट बी 22, बट इससे ज़्यादा आपने वेरिएशन नहीं करनी। हाँ, वो करके देता है वो डिफरेंट बात है, हमने नहीं करनी। दीज आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। क्यों? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट सेम है। खाली इलेक्ट्रॉन सेम अगर आप लिखेंगे ना तो उससे कुछ पता नहीं लग रहा। You have to say that electrons arrangement is same, that is why they have the same chemical properties. But physical properties will be different because physical properties depend on what you call the mass as well as a couple of other things. Okay, so हमारे पास आइसोटोप आ गया। हर आइसोटोप की एक अबंडेंस है, सारे आइसोटोप दुनिया में इजीली एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनकी कोई ज़्यादा है कोई कम है और वो हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आइसोटोप्स को बताते कैसे हैं। दिस वन, द वन ऑन द लेफ्ट, विल रीड इट एज सोडियम 23। सोडियम बताने से बता दिया मैंने कि इसमें 11 प्रोटॉन है, और सोडियम 22 का मतलब है कि उसमें 22 मास है, और सोडियम 23 का मतलब है 23 मास है। ठीक है, दैट्स हाउ वील नो कि कौन सा आइसोटोप है, एंड दैट इज हाउ वी फिगर आउट कि आइसोटोप्स क्या हैं कैसे हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वन पर्टिकुलर पार्टिकल, आई वांट यू टू फिगर आउट कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक Cr3 पॉजिटिव, जो कि ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है आपको विद हाइड्रोक्साइड। इट विल हैव 24 protons because chromium is 24, and this has 54 as its mass. So go on, calculate its protons, its neutrons, its electrons. Oh God, what's happening here? All right, so let's see. सबसे पहले we know the protons are going to be 24. Electrons are proton minus charge, so 24 minus 3, 21. And neutrons are 54 minus 24, so that's 30. And there you go. That is the proton, electron and neutron in this thing. Okay, so we are done with section 1.1 and 1.2 of the syllabus, and these are pretty basic. There are some exam style questions. If you're using the new book, then there are 5 questions, छोटे से हैं, try to answer them. I think वो आसान होंगे. Main things that you need to know is number 1, deviation कैसे होती है, number 2, the charges, how to figure out proton, electron, neutron, and number 3, why something is negative because it gains electrons and something is positive because it loses electrons. How are isotopes same? They have the same chemical properties because they have same electronic configuration, arrangement of electrons. खाली electrons बताना ज़रूरी same नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. And how are they different? They have different mass, so that gives them different physical properties. Okay, so thank you so much for joining in. I hope to see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.